नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी को रिव्यू करेंगे जिसका टर्न अराउंड लगभग तय लग रहा है। तो दिस कंपनी हैड IPO'd इन September 2025 and since the IPO of this company, since 8 months 9 months the stock price has just been correcting. It has corrected by 70% now and अभी तक टर्न अराउंड हुआ नहीं है. So the stock price hasn't turned around yet. It's just consolidating, but there are couple of information or data points which could be perceived or construed as leading indicators of a turnaround, right? So the first data point is कि इस कंपनी के जो promoters है, they have bought 20 crore shares of this company. तो promoter stake जो है, जो 55% था, अब वो बढ़ के 58% हुआ in the last quarter or the previous quarter. So the promoter stake increased by 3%. सेकेंड थिंग, इस कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट बेस है दैट इंक्रीज फ्रॉम 50 करोड़ टू 250 करोड़, तो करीबन 5x इंक्रीज हुआ है. केपेक्स किया इस कंपनी ने, नया कुछ कर रही है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ. तो ये दो मेजर सपोर्टिंग डेटा पॉइंट्स है फॉर a turnaround which could be possible in the next quarter or two, right? So the name of the company is Gem Aromatics. It's a specialty chemicals company. एंड यूजेनॉल एक प्रोडक्ट है जो ये कंपनी बनाती है. यूजेनॉल आप नॉर्मली टूथपेस्ट में या फिर पेन किलर्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यूजेनॉल में क्लोव होता है. तो इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है, जो सारे इम्पॉर्टेंट FMCG कंपनीज़ है, कोलगेट से लेके जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, 60% मार्केट शेयर है इस बिज़नेस में. द यूजेनॉल बिजनेस में इट हैज़ 60% मार्केट शेयर. इट्स अ हाई एबिटा बिजनेस, but the issue is that this business contributes 20% to the top line. So 20% contribute करता है ये business, सिर्फ 20% contribute करता है top line को. There is another business which contributes 70% to the top line, and that business is कंपनी मेंथॉल बनाती है. तो आप च्युइंग गम्स में या फिर मेंटोस में जो मिंट का जो एक फ्लेवर या स्मेल आता है, मेंथॉल is the product that goes into the products that we use, and there are multiple other use cases for menthol as well. So now the thing is, menthol जो product बनता है, it is made out of mint, and mint is a crop. एंड एक अल्नीनो जैसा सिचुएशन जब आते हुए दिख रहा है, सो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्री रिस्क टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल ऑफ दिस कंपनी. तो ये एक लो मार्जिन बिजनेस है बट एक हाई वॉल्यूम बिजनेस है, एंड इसका जो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो एक एग्री रिस्क है, मतलब क्रॉप रिस्क है. तो मिंट का अगर क्रॉप ख़राब हो जाएगा तो मिंट के जो प्राइजेस है, जो बचा कुछ सप्लाई है, उसके प्राइजेस बहुत बढ़ जाएंगे एंड द मार्जिन्स of this company would be hit. So that is what has happened in the last 1 year. So what this company is trying right now is to move from an agri based raw material which is mint to a laboratory based raw material. तो menthol जो बनेगा वो फिनॉल डेरिवेटिव से बनेगा. तो कौन सी केमिकल कंपनी फिनॉल्स बनाती है? दीपक नाइट्राइट बनाती है. तो फिनॉल डेरिवेटिव से, जो कि क्रूड डेरिवेटिव है, पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव है फिनॉल से मेंथॉल बनाया जाएगा और वो मेंथॉल को इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे भी उसको इस्तेमाल करते हैं, च्युइंग गम्स में, मेंटोस में, या फिर जो भी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे मेंथॉल इस्तेमाल किया जाता है. सो व्हाट दिस कंपनी इज़ डूइंग इज़ इट इज़ कमिंग अप विद अ कैपेसिटी. सो इट हैज़ इन्वेस्टेड अराउंड 250 करोड़ टू कम अप विद अ कैपेसिटी एट दाहेज, जिसमें जो एक फंजिबल कैपेसिटी है, मतलब वहाँ पे आप मिंट से मेंथॉल बना सकते हो, आप क्लोव से यूजेनॉल बना सकते हो, आप क्लोव की जगह यूकलिप्टस यूज़ कर सकते हो, आप मिंट की जगह फिनॉल डेरिवेटिव्स यूज़ कर सकते हो. whatever end products you want to make, it's a fungible capacity that the company has come up with. So this is one very important thing. It's a capex that this company has done for a fungible capex, right? The second thing is this company has already taken the required certifications to become a contract manufacturer. तो जो भी ये flavors and fragrances के जो companies है, FMCG companies, उनके जो भी requirements होते हैं अपने products के लिए, तो they want someone to do the contract manufacturing for it. तो ये company जो है, the capacity which it has erected right now and the capacity with which it has come into the market right now,
it wants, or it is getting certified on contract manufacturing for multiple FMCG clients with which it is already working. तो दिस इज़ अनदर, जो यूटिलाइजेशन है उनके प्लांट्स का वो 60% है, बट वंस द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पीस फॉल्स इनटू प्लेस तो ऑब्वियसली यूटिलाइजेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं. सो जेम एरोमेटिक्स इज़ द कंपनी विच आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी एंड इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने 800 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है अगले साल का. सो करंट रेवेन्यूज अराउंड 365 करोड़. तो the promoter holding has gone up. The fixed asset base is up 5x. The growth guidance that the promoter has given is very strong. Keep this company in the watch list for the next 1 to 2 quarters. This is predominantly for value investors. जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास पेशेंस होता है रुक कर इन्वेस्ट करने का, those are the kind of people who could look at GEM Aromatics. So thank you very much for your time.